Hello, students. We'll do the last three questions which are remaining for the topic of probability here. The question says two unbiased dice are thrown. If X represents the sum of numbers on the two dice, write the probability distribution of the random variable X. Find mean, standard deviation, and probability of mod of X minus 7 greater than or equal to 3. So let's see how are we going to do this. First and foremost, the question is about throwing two unbiased dice. So sample space देख लेते हैं क्या होता था इसका. When you throw two unbiased dice, if you remember, your sample space will have 1 1, 1 2, and up to 6 6. तो ये 36 elements होते थे. Okay? Question में हमको बोला है x represents the sum of numbers on the dice. So x is that total. So if you throw a dice and एक dice पे 2 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया, तो x की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल. मतलब आपको इस जितने पॉसिबल ऑप्शंस है एक्स के, एक्स इज द सम, तो टोटल के जितने ऑप्शन है, सम के जितने ऑप्शन है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. मतलब हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो बताना है. सो हाउ वील डू दैट, लेट्स सी. सो एक्स इज द सम ऑफ द नंबर्स. वील फर्स्ट ड्रॉ द सम टेबल. सम टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्सप्लेन. This is a sum table. This is a sum table. So let's see how I have drawn this. These are the values on the first die. So you're throwing basically two dice, right? So first dice पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है. Second dice पे भी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है. वर्टिकली मैंने ले लिया है. अब अगर ये नंबर की बात करें तो इसके लिए 2 + 3. ये नंबर की बात करोगे तो 4 + 5. I hope you're understanding how we are getting each of the values, and like that adding the sum and the column, row and the column, we are able to fill all of these values. So as you can observe, the first possible value of x starts from 2 here, and the largest possible value of x is 12. कभी भी 2 डाइस फेंकोगे तो 12 से ऊपर टोटल नहीं आएगा कभी भी. ओके, एंड मिनिमम 2 ही आता है, उससे छोटा भी नंबर नहीं आता है. सो ये सारे नंबर्स पॉसिबल हैं. अब इनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर 4 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी तो 4 ये रहा यहाँ पे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. आई जस्ट इरेज दिस. ओके, 4 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए 4 यहाँ पे 3 बार है. तो ये जो 4 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 3/36 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे टोटल 36 एलिमेंट्स है इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, येलो हाईलाइटेड. सो आउट ऑफ दिस 36 ये जो 3 है वो 4 है. इसी तरह से अगर 6 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो 6 is 5 टाइम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 आउट ऑफ 36 एंड सो ऑन. सो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करोगे विच विल लुक समवॉट लाइक दिस. नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर सिर्फ उतना ही पूछा है, आप कॉलम नंबर 1 एंड 2 ही ड्रॉ करोगे. दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2. अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला है तो आप इतना ही ड्रॉ करोगे. आप देख सकते हो 4 की प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी 3/36. 4 3 बार था, 6 5 बार था. यू कैन क्रॉस चेक. ओके, सम टेबल से आप क्रॉस चेक कर सकते हो. हर एक नंबर जितनी बार है उतनी बार लिखा गया है यहाँ. अब क्वेश्चन में सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा था. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑल्सो, एंड प्रोबेबिलिटी वाला ये पार्ट भी देखेंगे. सो व्हेन आई टॉक अबाउट मीन, last lecture also we saw this was the formula of mean. Ex is summation of x px. So basically table में हमने x into px कैलकुलेट किया है. x into px is multiplication of these two values. ये values को मल्टीप्लाई करते गए हैं और इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है. ओके, सो दैट इज हाउ यू फिल इन द टेबल. एंड ये जो कॉलम 3 का टोटल है, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर एंड चेक. उसका टोटल 7 आ रहा है. इसका मतलब है आपके मीन की वैल्यू 7 आ गई. ओके, क्वेश्चन में नेक्स्ट थिंग जो पूछी गई है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है. स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास x² px होना चाहिए. उसके लिए हमने x² का एक कॉलम बना दिया है.
एक्स स्क्वायर पी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर को पी एक्स की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये वैल्यू मिलने के लिए हमने 4 and 1/36 को मल्टीप्लाई किया है। Similarly, if I talk about say this value, I've multiplied this 121 and 2/36, ये 121 11 का स्क्वायर है, ओके। x के कॉलम का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है। So that's how I've calculated. Just to save time, I have done things already and shared it here. So इसका टोटल आपको 329/6 आ रहा है। So यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस। So ये जो 329/6 है वो आपका e of x स्क्वायर है, ओके। That's 329/6. क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, पहले वेरिएंस ढूंढते हैं। So variance का formula, we have seen it yesterday also, e of x square minus e of x the whole square. So वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। e of x square मतलब 329/6 and e of x का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। Of course, I will be using the calculator here. So let's see the calculator. We are already on computational mode. So you have 329/6 minus 7 square. So that gives me 35/6. If you want, you can write the answer in decimals. You can leave it in fractions, no problem. Okay, 35/6. That was your variance. Question is asked as standard deviation. So we have not yet found standard deviation. Standard deviation ढूंढेंगे. Standard deviation formula is square root of variance. The formula for standard deviation is square root of variance. So let's use the calculator again and we'll calculate the square root of answer. Answer was 35/6, right? So ये आपको मिल गया है 210/6 स्क्वायर रूट में। इसको अगर डेसिमल फॉर्म में फिक्स कर देंगे शिफ्ट मोड यूज करके 4 decimals पे, so now your answer is 1.5541. Okay, so 1.5541. That's a standard deviation. That's a standard deviation. Let's observe the question again. The question is asked you mean, the question is asked you standard deviation. Question में कुछ और पूछा है, probability का part पूछा है. Because I don't have space here, I'll do it here and we'll use the table on the next page. Okay. Question में पूछा गया है एक और part, that is probability of mod of x minus 7 greater than or equal to 3. इसको I'll do it here itself because of space constraint. Now let's understand mod of x minus 7 is greater than or equal to 3. अब मॉडुलस ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब जो मॉडुलस के अंदर जो नंबर है वो 3 या 3 से बड़ा होगा पॉजिटिव में, एंड नेगेटिव में कैसा हो जाएगा पता है, -3 -4 ये सब के मॉड जो लोगे, मॉड लेने के बाद आंसर पॉजिटिव हो जाता है, राइट। सो ये जो मॉड्स है मतलब 3 4 5 इस तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपका x माइनस 7 यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, ओके, नॉट हियर. So how will I write this? So x minus 7 is either greater than or equal to 3. This is this part. Or x minus 7 is less than or equal to -3. That is this part. Okay. So x minus 7 if it is greater than or equal to 3 मतलब x is greater than or equal to 10 हो जाएगा और x is less than or equal to 4 हो जाएगा. -3 plus 7 होगा which will mean x is less than or equal to 4. So question में जो probability पूछी है that is mod of x minus 7 greater than or equal to 3. This is equal to probability of x greater than or equal to 10 और मतलब प्लस होता है x less than or equal to 4. So यहाँ पे आपको probability of x equal to 10, x equal to 11, x equal to 12. 12 पे रुकेंगे क्योंकि
डाइस के एडिशन में यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, टेबल आपके सामने ही है स्क्रीन पे, 10, 11, 12, मैक्सिमम 12 पॉसिबल है ना। सो 10 को इक्वल है तो 10 से स्टार्ट करना है, 11 लेना है और 12 लेना है। ओके, तीनों की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास स्क्रीन पे है, बट सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। लेस देन इक्वल टू 4 बोला है, मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आएगा, 1 नहीं होता है एडिशन कॉइन्स का। ओके, ये येलो पार्ट हाईलाइटेड टेबल पे। सो 2, 3 एंड 4 भी चलेगा यहाँ पे। ओके, सो ये वैल्यूज डालेंगे अब यहाँ पे। आई कंटिन्यू दिस साइड। 10 is 3 times, plus 11 is 2 times, 12 is 1 time, 2 is 1 time, 3 is 2 times, 4 is 3 times, सबका डिनोमिनेटर 36 था। Answer is 12 by 36, which is 1 by 3. Okay, this is your probability of modulus. This is your probability of the modulus. I hope the question is clear. So there were 4 parts in the question. Write the probability distribution. अगर सिर्फ probability distribution बोला है तो आप ये वाला सिर्फ टेबल का कॉलम नंबर 1 and 2 ही ड्रॉ करोगे। सेकेंड पार्ट इज मीन पूछा है, सो मीन के लिए आपने एक्स पी एक्स ड्रॉ किया। अगर उतने पे क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे का क्वेश्चन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर पी एक्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, वेरिएंस निकालना पड़ेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर पी एक्स ढूंढा, एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ this. And the question was also asking us probability of mod of this. So we found the probability of modulus. Okay, I hope the question was very much clear. To the next question now. Let's get to the next question. Okay, coming to the next question. A unbiased coin is tossed 3 times. Okay, so now this time the experiment is about tossing 3 coins. So let me write the sample space. 3 coins का sample space लिखने के लिए पहले 2 coins वाला लिखते हैं 2 बार, एंड फर्स्ट वाले में सब जगह एक एच लगा देंगे, सेकेंड वाले में सब जगह एक टी लगा देंगे, सो यू गेट द करेक्ट सैंपल स्पेस विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। ओके, your random variable x is defined over here as the difference, absolute difference. Okay, absolute difference मतलब positive, negative नहीं आएगा, मॉडुलस लगा देंगे, difference between the number of heads and tails। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक्चुअली। सो फर्स्ट केस ये वाले में heads are 2 and tails are 1, so possible value of x over here is 1, 2 minus 1 difference। Okay, number of heads is 2, number of tails is 1, so 2 minus 1। सेकेंड केस में वापस 2 हेड्स है 1 टेल है, तो डिफरेंस इज 1। ओके, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है। एक काम करते हैं, वी राइट द इवेंट है, वी राइट द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, इन ईच केस, सो एच टी एच, पी एच एच, एच एच एच, टी टी एच, एच टी टी, पी एच टी, एच एच टी, एंड लास्टली टी टी टी। So number of heads is 2, number of tails is 1, so difference is 1, again difference is 1। यहाँ पे heads are 3, tails are 0, तो difference is 3। heads is 1, tails are 2, difference में absolute लेने बोला है तो 2 minus 1 भी चलेगा, या 1 minus 2 को mod डालोगे तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पे again difference is 1, यहाँ पे again difference is 1, 1 and यहाँ पे 3। So if you can observe, आपका जो difference है वो या तो 1 है या फिर 3 है। ओके, आपका डिफरेंस जो है वो या तो 1 है या फिर 3 है। ओके, सो यहाँ पे x के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा पहले तो। सो x की वैल्यू या तो आपकी 1 आ रही है या फिर 3 आ रही है, उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा, हमारे पास 8 इवेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आउट ऑफ दीज 8 इवेंट्स 6 times there is 1, so 6 by 8, and 2 times there is 3, so 2 by 8। I might simplify this, this becomes 3 by 4, this becomes 1 by 4। Okay, on simplifying,
So find the moment generating function of x and hence find the first moment about origin and the second moment about mean. So we'll see how to do this. To find the moment generating function, we'll first find the moment generating function about any point A. This is how you write it. The formula for discrete type of table is summation of pi times x minus a, the whole raised to r. Okay, the formula here. Okay, sorry, it's not this. It's going to be e raised to t times x minus a. Okay, xi minus a, about the point A if we are talking about. So let's substitute the values. Pi means the probabilities, xi means the values of x. So because we have only two values of x, 1 and 3, and corresponding probabilities are 3 by 4 and 1 by 4. So when I put 1 for x, I'll get 1 के लिए हमारा 3 by 4 है probability. So 3 by 4 e raised to t into x की जगह 1 डाल रहे हैं minus a प्लस जब x की जगह 3 डालोगे तो यहाँ पे probability 1 by 4 है 3 minus a. Okay. Now if I'm just finding the this is moment generating function about the point A. So if I'm finding it about origin, तो 0 लिखेंगे यहाँ पे. So A will become 0. So e raised to t plus 1 by 4 for e raised to 3t यहाँ पे upon 4. So I can just write 3 times e raised to t plus e raised to 3t divided by 4. This is a moment generating function about origin. Now the question is also asking you a few things more. Find the first moment about origin and the second moment about mean. Now, how do you find the moment about origin and mean? So this is what I actually wrote the formula before. So moment about origin is denoted like this. First moment about origin. You put a dash above. Okay. And the formula here is going to be the value of expectation, which will be about the point. Okay, over here e of x only directly. So e of x is going to be the mean, and to calculate e of x, we require to calculate xpx. So I'll do it horizontally. So 3 by 4 into 1 is 3 by 4, and this is also 3 by 4. इसका भी total करेंगे हम. So here also we'll write total. This total is 1, and this total is 6 by 4, which is 3 by 2. So that is your first moment about origin, which is 3 by 2. Okay. So we write here the first moment about origin. Okay. Then they've asked you the second moment about the mean. They've asked you the second moment about the mean. So second moment about the mean कैसे calculate करेंगे? Formula. Second moment calculate करें. ऊपर dash नहीं आएगा because moment about the mean calculate कर रहे हो. E of x minus mean मतलब x bar इसका square. ओके ये कैलकुलेट करना. सो ये कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले तो मीन कैलकुलेट किया हुआ है हमने. मीन इज 3 by 2. नाउ लेट्स कैलकुलेट x minus x bar. Let's calculate x minus x bar. 1 minus 3 by 2 is negative 1 by 2. And 3 minus 3 by 2 is 3 by 2. I'll calculate the square. So 1 by 4. This will be 9 by 4. We also require px into this. Okay, we also require px into this. So I'll write it here. X minus x bar square into px. So basically vertical table therefore helps us, instead of the horizontal table. Fine, I started with horizontal, I shouldn't have. Okay. So x minus x bar the whole square into px is going to give me 1 by 4 into 3 by 4, which is 3 by 16, first value.
and second value is 9/16. इसका जो total होगा वो आपका second moment about origin हो जाएगा, which is 12/16. नहीं, second moment about mean, 12/16, which means 4 threes and 4 fours. So this is your second moment about the mean. Okay. So these are the two questions. Let's look at the last question, which is remaining now. Okay. X denotes the outcome of a fair die. Find the moment generating function of X and hence find the mean and variance. So यहाँ पे mean and variance आपको ढूंढना है, moment generating function से directly नहीं ढूंढना है, but आपको पहले moment generating function ढूंढना है और उसकी help से आपको mean and variance निकालना है. Okay. So X is the outcome of a fair die. So dice जब roll करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. Px निकालना है. 1 will be 1 out of 6. 2 will also be 1 out of 6 options. 1 out of 6 option. 1 out of 6. And so on. All are 1 out of 6. Question में moment generating function पूछा है. Moment generating function का formula. When not mentioned, you will assume it around origin only. Okay. या फिर वो central moment पूछेंगे वहां पे अगर origin के against नहीं है तो. So as we had seen the formula here, we saw it here, right? Yes. It is summation pi times e raised to t times xi minus a0 हो जाएगा यहाँ पे. pi times e raised to t times xi. So let's substitute the values. All our pi's are 1/6. So first is e raised to 1t. xi मतलब x की first value. Second value e raised to 2t, e raised to 3t, 4t, 5, 6. And all of them have a 1/6, which becomes denominator 6 here. Okay. So if this is clear, the question is asking us mean and variance. Now to find mean and variance using moment generating function. Using moment generating function. There are two options. One is you expand the entire terms and then find the coefficients over there. Second option is you take the derivative. You take the derivative of the moment generating function at t is equal to 0. So the first moment, I'll take the derivative, will be given by taking the derivative of this function at t is equal to 0. So that will be d by dt of m0 of t at t is equal to 0. So let's take the derivative. E raised to t का e raised to t. ये हो जाएगा 2 e raised to 2t, 3 e raised to 3t, 4 e raised to 4t, 5 e raised to 5t, and 6 e raised to 6t. Divide by 1/6 as it is, or divide by 6 actually. We'll replace t is equal to 0. We'll replace t is equal to 0. So the first term will become 1, second is 2, 3, 4, 5, and 6. Divide by 6. So this total is 6, 10, 10 plus 11, 21/6, which turns out to be 7/2. This first moment is nothing but your e of x. This is nothing but your e of x. Let's calculate the second moment. Second moment के लिए you will have to take double derivative. You'll have to take double derivative. तो derivative का derivative लेंगे. So ये जो derivative मिला है इसका वापस derivative लेंगे. So e raised to t as it is. We had 2 e raised to 2t. Double derivative लोगे तो 4 हो जाएगा. Then we had 3 e raised to, so 9 हो जाएगा. We had 4 will become 16. We had 5 which will become 25. And 6 will become 36. Divide by 6 as it is. Substitute t is equal to 0.
So all the e raised to zeros will become 1. So 1, 4, 9, 16, 25, and 36. Divide by 6. So I have a 50 plus 40, that's 91 by 6. So this is nothing but your e of x squared. My question is asking me mean and variance. Mean and variance. So mean is the first moment. That's my e of x, which we found to be 7 by 2. And variance, we have the formula e of x squared minus e of x, the whole square. So let's substitute the values. E of x square is 91 by 6 minus 7 by 2 का square. So 91 by 6 minus 7 by 2 square. Okay, there's a minus here. There's a minus. So let's calculate the answer. That's 35 by 12. 35 by 12. So that's my variance and this was my mean and we completed the question. So this completes all the different questions of probability. Okay.